Miss, aren't full numbers without decimals? They are like full numbers, like 6, 7, 8. Yes. Yes, Ayat. Yes, Kareem. Everyone can speak. Yes, Miss. So what are whole numbers? Ma'am, a whole number is any positive number that does not include a fraction or decimal. So basically, whole numbers are the numbers that start from 0 and move on 1, 2, 3, and they carry on moving on. So the numbers starting from 0 and moving on are called whole numbers. But what are natural numbers? Ma'am, they do not include zero. They start from 1, 2, 3. Very good. The natural numbers are the numbers that start from 1, 2, 3, and carry on. They do not include the whole number or 0. So if the 0 is included in numbers, this is called whole numbers. If 0 is not included, then it is called natural numbers. Okay. Now coming to integers. What are integers? Integers are Ma'am, 0, they are the numbers positive numbers, which include the positive and negative signs. positive and negative both the numbers. So the integers are the numbers that include 0, positive numbers and negative numbers. So students, what are whole numbers? Whole numbers include 0, 1, 2, 3 and all positive numbers only. Natural numbers do not include 0. They start from 1, 2, 3 and only positive numbers. Integers include 0 as well, positive as well and negative as well. So integers include positive, 0 and negative numbers. Okay, so now we are going to identify what are integers and what are natural numbers. So they are saying from the given numbers, list the numbers that are positive integers, negative integers, positive numbers, negative numbers. Okay, now tell me one more thing. Do integers include the decimals or fractional numbers? This is the number line. What is a number line? A number line is a line which has 0 in the center and which has positive numbers on the right side and negative numbers on the left side. Okay, so what are the positive numbers? Positive numbers on the right side and the negative numbers on the left side. So between 0 and 1, there are so many infinite numbers. How many numbers are there between any two real numbers? There are infinite numbers. So what are the numbers? 0.1, 0.2, 0.5 and all those numbers. So all these numbers are not included in integers. Are they included in integers? No. We do not include the decimal or fractional numbers in the integers. Okay, we do not include decimal or fractional numbers in the integers. So now we are starting from question number 1. From the given numbers, list the numbers that are positive integers, positive numbers and negative numbers. So we know what are positive integers, we know what are negative integers, and we know what are numbers and positive and negative numbers. So we can now easily identify them. Okay, so question part 1. Yes, Mustafa, are you able to hear me? Can you hear me? Yes. Can you see the screen? Okay. So try Yes, ma'am. to engage with the lesson, okay? Okay, what are the positive integers? Now let's find out the positive. This is negative. This is fraction. We know integers are not fractions and integers are not, fractions cannot be integers. We know that. And decimals cannot be integers. Now what about 0? Is 0 a positive integer or not? Yes, student. What about 0? Is 0 positive or negative? Ma'am, both. Ma'am, It's neutral. both neither the 0 positive or is neither the negative. neither positive nor negative. It is not both. It is neither positive nor negative. So 0 is not a positive integer because we are talking about positive integers right now. We are talking about positive integers. So fractions are not integers, decimals are not integers, minus 12 is negative number. What about 10,001? Is it a positive integer or not? Yes, it is. Yes, it is a positive integer. Okay. Then fractions are not integers. Minus 2026. This is a negative one. 4. What about 4? Is it a Yes, positive it integer is. or not? Yes.
It is a positive integer. Okay. Question number 2. Now for question number 2, minus 2026, and then let's find out. So minus part 2 is negative integers. Okay. Minus 2026 and which number is minus negative 12, integer? Everyone. Minus 12. Everyone should participate. Minus 12 and any other number. 0.3, minus 0.3, So 0.3 is not an integer. minus 0.3. We just discussed that 0.3 decimals are not integers. Did we discuss that decimals are not integers? Yes. So how can you say that 0.3 is an integer? Decimals are not integers. So it means this is not an integer. Okay. So what are the integers? Minus 12 and minus 2026. Question number 3. Now, okay, question number 3 will go with positive numbers. Now, numbers can be any number. Numbers can be either fractions or decimals or anything. Okay, so find out the positive in numbers. So what is the first positive number? 1 over 1 5 over One is by. 5, Okay, next positive number. 0. Everyone should answer. 4.33, 4.33. Next positive number. 10,001, 10,001. Next positive number. 4. 4, 4. 4. Okay, now I'm going to ask the questions one by one. Yes, Mustafa, what are the negative numbers? Minus Yes, 220. Minus no, 220. negative numbers. Start from the very first number. Now, is minus 0.3 a negative number? Yes. Yes, it is a negative number. Decimals are numbers. They're not integers, but they are numbers. Okay. Okay. What is the next negative number? Yes, Mustafa. Minus 12. What about minus 9 by 7? Why don't you say minus 9 by 7? Yes, speak fastly. It's a fraction. So fractions are numbers now. I just told you that fractions are not integers. They are numbers. Okay. So we can write minus 9 by 7. Okay. What is the next negative number? Minus 12. Minus 12. Okay. Ayat, what is the next negative number after minus 12? Minus Yes, Ayat. 1 whole 1 by 2. Minus 1 whole by 2. Very good. Next negative number? Yes, Ayat. Minus 2026. Okay. Question number 2. Absolute zero defined as 0 Kelvin is a theoretical lowest possible temperature. 0 Kelvin is 273.15 degrees centigrade below 0 degree centigrade. Represent this temperature using a negative number. Yes, bachon. This is the temperature and we have to represent this using a negative number. So what will be the answer? Who can tell me? Minus 273.15 Minus degrees Celsius. 273.15. This will be using a negative number. Okay. The lowest point in North America is the Badwater Basin, which is 86 meters below sea level. Represent this altitude using a negative minus number. 86, Yes, 86 meter. Minus 86 meter. Minus 86 meters. Okay, part C. An investment portfolio. Okay, give me 1 minute. minus $85,000, An investment portfolio suffered a loss of 85,000 in the year 2020. Represent this minus loss. $85,000, Minus $85,000. Very good. minus Okay, D part. 0.15 A baby kg, has lost a mass of 0.15 kg. Minus 0.15 kg. Minus 0.15 kg. Very good.
Okay, fill in the box. Now everyone is going to participate together. Yes, A part. Miss 60 is greater than 60. 16 is less than 60. B part. -6 is less than 8. 3.1 is less than 3.2. C part. -6 is less than 8. Minus 6 is less than 8. 30 D is part. more than minus. Fifth part. E part. 30 is -2 is less than 0. -2 is less than 0. F part. 9.8 is more 9.8 is than greater than -9.9. minus less than 9.8 is greater. Ayat, keep on answering. Why are you quiet, Ayat? Ayat, Mustafa, Fajr, all of you have to answer at the same time. Okay, use a number line to illustrate each of the following. Part A. Now we are going to use a number line to illustrate them. Question number 4. So if this is a number line, Miss 0 will be in the center. 0 will be in the center. Then we have 2 whole 2 by 5. What does it mean? 5 times 2 is 10, 11, 12, 12 by 5. So in decimals, what is 12 by 5? Please tell me fastly. 12 by 5 in decimals. 2.4. So it is 1, it is 2, we can make it like this, 2, 4, 6, and here also 2, 4. So now let's represent them. First of all, we have 0, then we have 2.4, Ma'am, you didn't 2.4 add a comes over here, subtraction sign. then -4 comes over here, then 6 comes over here, and -2.8 comes over here. Is it clear with everyone? No, Miss. Yes, Mustafa? Miss, I don't Can you understand the understand? number line. Yes. Miss, You I don't don't understand the understand. number line. Okay, let's suppose I have a number line like this. Where is 0? Here is 2. Here is 4. Here is 6, right? Here is -2. Here is -4. Here is -6. Well, I have just plotted a few numbers on the number line. Did you get it? Yes. You get it? Okay. Yes. Now, the first number is 2.4. So, where will 2.4 come? 2.4 will come over here. I will put a dot over here. Okay. Now, where is going to 0 come? 0 is over here. I will put a dot over here. -4. Where is -4? This is -4. I will put a dot over here. Where is 6? This is 6. I will put a dot over here. -2.8. I will put a dot over here. Is it clear? Yes. Yes, Miss. Okay. Okay. Okay, next number line. Part B. Again, I will draw a number line. Then I will write 0 in the middle. 2, 4, 6, 8, 10. -2, -4. Okay, now let's plot the points. -0.55. 0.5 minus 0.5 will come over here. 4. 4 Or will will come come over up. here. 1 by 10 means 0.1. -0.1 will come over here. +2 will come over here. -2 will come over here. Is it clear? Yes. Yes. Okay, next is the integers between -4 to 4. So 0, 1, 2, 3, 4. So we can say -1, -2, -3, -4. So we can say we are starting from here and going till here because they're saying integers. They're saying integers between -4 and 4. Or we can label them like this. All the integers coming between -4 and 4. Clear? Yes.
Yes. Last is positive integers less than 10. Now they are asking for the positive integers, not the negative one. So it means we are only going to plot the positive integers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So they are saying less than 10. So less than 10 means we will stop at 9. So they are saying positive integers. And we know 0 is neither positive nor negative. So we will stop at 1. Is it clear? Yes. Okay. Using a number line, arrange each of the following in ascending order. Okay. So now what will come? Ascending order means smallest first. So which is the smallest one? Mustafa will tell me. Yes, which is the smallest one? Minus 13. Yes, speak loudly. Minus 13. Minus 13. Okay. Yes, Ayat, next. Yes, Ayat Amir, next. Minus 3. Minus 3. Yes, Fajr, next. 23. 23. Yes, Harim, next. Harim, Yes, miss. next number. Miss Harim, next 30. number. Yes, Muhannad, next number. 230. 230. Okay, part B. Okay, part B, the smallest number. First of all, we need to convert it. 3 by 20. What is 3 by 20 in decimals? 0.3. 0.15. When you divide 3 by 20, you get 0.15. So it would be minus 0.15. So in place of this, you can write minus 0.15. Now, what is the smallest one? Yes. Yes, Bachon, what is the smallest Minus one? 10. Minus 10. Very Minus good. 10. Minus 10. Then Minus 0. minus 0.5. Minus Then minus 0.15. 0.15. Then 15. And then 150. Question number 6. If 6 meter represents 6 meter above sea level, what does minus 10 meter represents? Below sea level? Yes. 10 meter If below. plus 40 represents depositing 40 in Yes. the bank, minus 25 represents withdrawing Withdrawing. money in the bank. Withdrawing. If minus 60 represents clockwise rotation of 60 degree, plus 30 represents anti-clockwise. Anti-clockwise. If a score of 2 represents an increment of 2 marks in the test, score of minus 4 represents deduction of the marks. Everyone clear with this? This was a very easy question. Yes. Okay, more easy question. Tell me greater than, lesser than. Minus 4 Miss, is minus greater 4 is than greater minus than 6. minus 4 is greater less than. than minus 6. Greater than. Minus 11 is greater than minus Greater than. First of 11.5. all, tell me minus 4 is greater than or minus 6 is greater than. Minus 4 is greater. Minus 4 is greater. Now listen to me this thing. If I have 0 here, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Which comes first? Minus 4 Minus 4. पहले आएगा कि minus 6? Minus 4 पहले आएगा. So minus 4 is greater than minus 6. Okay? Now, Minus minus 11 is 11 or greater minus than 11.5? 11.5. Minus 11. Minus 11. Minus 11 is greater. सबको समझ आ रही है? All of you are moving with me? Okay. Yes. 1/5 और 1/3 न्यूमिनेटर सेम होंगे तो आपने डिनोमिनेटर को चेक करना है. डिनोमिनेटर बिग होगा तो वो नंबर स्मॉल होगा. न्यूमिनेटर सेम है, 5 बिग है 3 स्मॉल है, तो इसका मतलब 1/5 एक्चुअली में स्मॉल होगा. समझ आई? Yes. Yes. डिनोमिनेटर में उल्टा होता है. ठीक है. और अब यहाँ पे न्यूमिनेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर में डिफरेंट है. अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो हमें सेम करना पड़ेगा किसी एक चीज को. हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? -2/6. अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5 है. -2 ग्रेटर है या -2/6 is -5? greater.
-2 ग्रेटर है या -5? -5. माइनस -2 is greater. -2 ग्रेटर है। ये देखो ना, -2 पहले आएगा या -5 पहले आएगा? -2 पहले आएगा ना, तो इसका मतलब कि -2 ग्रेटर है। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक दफा दोबारा समझा रही हूँ, डी पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होंगे, आपने डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में से किसी एक को सेम करना है। अब यहाँ 3 से 2 को मल्टीप्लाई करके हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो हमने -2/6 लिख लिया और डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। अब आपने देखना है कि डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो आपने सिर्फ न्यूमिनेटर को देखना है बस। अब सिर्फ न्यूमिनेटर को देखो, न्यूमिनेटर में एक तरफ -2 है और एक तरफ -5 है। अब बताओ -2 नंबर लाइन में पहले आ रहा है या ना -5 पहले आ रहा है? -2. -2 पहले आ रहा है, इसका मतलब -2 ग्रेटर है। समझ आ गई बात? Yes. क्लियर हो गया सबको? ओके। यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, फिर से नंबर लाइन आ गई है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। एंड ना अब हमें आता है हमने नंबर लाइन को कैसे करना है। 0 सबसे पहले हम जो फ्रैक्शंस होंगे उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वो कहाँ पे लाई कर रही हैं। 1/3, 1/3 किसके इक्वल होगा? 0.3 के। 8 1 8, 9 10 11, 11/8 किसके इक्वल होगा? 1.375। ठीक है, अब बताएं बच्चों, अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है। सबसे पहले -0.3 कहाँ पे आएगा? -0.3 जीरो के इस साइड पे 0.1 होगा, 0.2 यहाँ पे -0.3 होगा। करेक्ट हो गया। अब 2.5 कहाँ पे आएगा? यस, 2.5 कहाँ पे आएगा? 2 के बाद ही आएगा ना 2.5, तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। 1.375 कहाँ आएगा? 1 के बाद आएगा, तो यहाँ आ जाएगा। 1 पे 1 आ गया। -0.2 कहाँ आएगा? -0 के बाद 0.2 आएगा। 0.11, 0.110 से, क्योंकि 0 -0.2 था इसलिए हम लेफ्ट साइड पे गए हैं। नेगेटिव पे नीड टू मूव टू द लेफ्ट साइड, लेकिन 0.11 पॉजिटिव है तो हम राइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे 0.11 आ जाए। जी बच्चों को ए पार्ट सबको समझ आया? Yes. क्लियर टू एवरीवन? ओके। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, अब पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20 होते कौन कौन से हैं। 1 इज अ ऑड 19, इंटीजर, 17. 3 इज अ ऑड इंटीजर, 5 7 9 11 13 15 17 19। अब बच्चों 19. मैंने 1 से कौन से, अच्छा अब मैंने 1 से क्यों स्टार्ट किया? Why did I start with 1? Because they are saying positive odd integers, तो मैं negative numbers नहीं लूंगी, I will only take the positive ones। अब मैंने 20 के आगे 21 भी odd है, वो क्यों नहीं लिखा? Because they are saying less than 20, तो less than 20 मैं 19 तक लिखूंगी। अब मैं इनको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगी। I will write here 0 1, I can write 2 4 6 8 10, so we are only going to go with the positive ones। I should start 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 18, तो कहाँ कहाँ आ 20. जाएगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक हो गया। प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज्यादा हो और 10 से कम हो। अब 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और कौन सा प्राइम नंबर है? 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। 4 ही प्राइम नंबर है ना लेस देन 10। Yes. एनी अदर प्राइम नंबर लेस देन 10? और कोई भी नहीं है, तो अब No. हम इसको प्लॉट कर देंगे सी पार्ट को। 0 2 4 6 8, और कौन कौन से प्राइम नंबर थे हमारे पास? 2 3 5 7। यस बच्चों, क्लियर हुआ? कॉमन पॉजिटिव Yes. फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। अब वो कह रहे हैं 12 और 16 के जो पॉजिटिव कॉमन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स हैं कौन से। कॉमन फैक्टर्स का पता होगा फिर ही तो हम उनको प्लॉट करेंगे, राइट? ऐसा ही है। Yes.
तो अब हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन से हैं 12 और 16 के। तो 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स 2 times 6 is 12, 2 times 8 is 16, 2 8 is times 16. 3 is 6 and 3 4 is 4 8। What is it? तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके? एक तो 2 के टेबल में 12 और 16 दोनों आते हैं, 3 के टेबल में दोनों नहीं आते, बस इसका एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। तो हमारे पास आएगा 0 1 2 और सिर्फ 2 के ऊपर डॉट आ जाएगा, बिकॉज 3 के टेबल में 2 और 16 दोनों नहीं आते। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राइट डाउन टू इंटीजर्स लेस देन -100। ओके बच्चों जल्दी से बताएं, दो इंटीजर्स ऐसे बताएं जो लेस देन -100 हो। Miss, minus 0.13, minus 0.17. किसने बताए ये इंटीजर्स? मैम -99। नो, -99 नहीं, लेस देन -100, मोर देन -100 नहीं होगा। ओके टीचर माइनस Minus क्या 13, मतलब है? minus अगर यहाँ -100 है minus 13. -200 -200। तो -101 -102 भी हो सकता है, -101 103, इतना क्यों minus हो? 150. देखो एक बात बताओ मुझे, ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ यहाँ -10 है, -20 है। Miss, I can't see your screen. हाँ, no one can see my screen because I'm just resharing it. ओके अब देखो बच्चों, छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आपके पास ये नंबर लाइन है, ये 0 है, -10 -20, यहाँ पे -100 आ गया। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे -99, -99 पहले आ रहा है कि -100 पहले आ रहा है? -100। Minus 99. पहले कौन आ रहा है? -99। इसका मतलब -99 बिगर है -100 से, फिर उसके बाद आएगा -101। अब वो हमें कह रहे हैं कि लेस फाइंड करना है, -100 से स्मॉलर फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब -101 हम लिख सकते हैं, -102 हम लिख सकते हैं, -99 और -98 हम नहीं लिख सकते बिकॉज वो ग्रेटर है -100। जी सब बच्चों को ये बात समझ आ गई है? Yes, Miss. ओके, Yes, अब पार्ट बी पे आ जाओ। Yes, ma'am. राइट डाउन 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -10। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? कि वो बेशक नेगेटिव ना हो, ग्रेटर देन -10। अब बताओ -10 से ग्रेटर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? अब आपने ये देखा, ये -10 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बच्चों बताओ -10 से ग्रेटर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? Miss, minus 12, minus 11, minus 13. बेटा नॉन नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब कि नेगेटिव तो होंगे ही नहीं, 1 2 3 होंगे। बस 1 2 1 2। 1 2 3 क्यों? क्योंकि आपने अब ध्यान से फिर से मेरी बात सुनी है। राइट डाउन 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -10। अब ये -10 था, अब इससे ग्रेटर, इससे लेसर, यहाँ पे ये लेस होता जाता है, यहाँ पे ये ग्रेटर होगा। अब हम जब इस साइड पे मूव करेंगे तो हमें 9 -9 -8 -7 सारे हमें नेगेटिव मिल रहे थे, हमें 1 2 3 नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे थे। सब बच्चों को बी पार्ट की समझ आई है? यस टीचर आ गई। Yes. ओके, सी पार्ट। राइट डाउन 4 इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड 0 इंक्लूसिव। बच्चों इंक्लूसिव का मतलब होता है कि आपने -7 भी लिखना है और साथ 0 भी लिखना है, ये आपने साथ लिखने हैं। इंक्लूसिव मीन्स यू हैव टू राइट देम 4 इंटीजर्स। तो -7 0 और आप कौन कौन से इंटीजर्स इसके बीच में लिख सकते हो?
It comes Miss, in between -7 and 0. We can write -6, we can write -1 or any number. Okay, D part. Write down two numbers between -5 and -4. अब यहाँ पे उन्होंने इंक्लूसिव नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आप -5 और -4 को नहीं लिख सकते, इसके अलावा आपने कोई नंबर लिखने हैं, ठीक है। अगर इंक्लूसिव लिखा हुआ है तो यू कैन राइट दोस नंबर्स टू। इफ इंक्लूसिव इज नॉट रिटन, इसका मतलब आपने वो -5 और -4 को आप नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट -5 एंड -4। So write in two numbers between -5 and -4. -5 और -4 के दरमियान दो नंबर्स बताएं। -4.8 -4.9 पॉसिबल है? यस बच्चों, ठीक है, समझ आ गई। we ओके, can also write मूविंग टू द -5. नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज भी बहुत we can also write Miss, we can also write about we can also write what? -5.7, -5.6 of 5 to. Teacher, your voice is lagging. मैंने अभी आपको ये बात समझाई है कि हम -5 एंड -4 we cannot write -5 and -4 why? Because inclusive is not written there, so we cannot write -5 and -4. Okay, Miss, I was saying -5.7, -5.8. We can write how these can you things write together. -5.7? You have to write something in between -5 and -4. Something, if this is -5, Ma'am, it can be this is 4.5 and -4. 4.6. Yes, it can be 4.5 and 4.6. It cannot be after -5, not possible. You just need to write between -5 and -4. All right? Okay. Now next exercise. This one is also an easy exercise. Okay, who is going to tell me? -8 plus minus is always opposite signs are always minus, negative. जहां भी ऑपोजिट साइंस होंगे बच्चों दे इक्वल टू नेगेटिव। सेम साइंस किसके इक्वल होते हैं? सबको पता है ना कि प्लस माइनस माइनस होता है और साथ 3 आ Yes, जाएगा। ma'am. -8 प्लस माइनस -3 बताएं It बताएं। will be अब सब एक एक करके -11. -11, ठीक है, मोहन्नत ने कर दिया। अब एक एक करके सब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ आयत इज गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस आयत। ma'am, we'll write -1 plus -6, okay, next. Then what will I write now? Ayat, minus is plus, 6 plus 1 is equal to 7, and it will be -7. 6 plus 1 is equal to 7. okay. So -1 and -6, what we will get? I will get -7. Okay. C part. Yes, Mustafa. Can you solve C part? -11. -4 and -7, you will get 7, 8, 9, 10, -11. Okay. D part. Yes, Harim Fatma, Harim Essen. Yes, miss. D part. Can you do D part? Miss? Yes, yes, D part. Yes, Harim, can you do D Miss, part? I don't understand this question. Okay, listen to me then. -5, what is plus minus? Minus -2. Okay, so what you will get? 5. 5 plus 2 is 7. 7. And what is the bigger number? Sign of the bigger number? Minus. Minus. So you will get -7. Now can you understand? Yes, miss. Okay. Come to question number 2. Again, everyone is going to do. Yes, Fajr. Miss, we will get -30.
9 plus minus minus 4. What is 9 minus 4? Miss 5. 5. So we will get 5. Yes, B part. Yes, Harim again. Yes, Miss. Miss, can I do the next one? Yes, yes, Harim, can you do the B part? Yes, Miss. Okay. Miss 7. Okay. Who can do the C part? Yes, Mohannad. Ma'am, minus 17 plus 29 minus 17, it will be 1 and 2. 12 plus 12. 12. Okay, yes, Ayat. 20 minus 4. Can I tell the answer? Yes, yes, D part. Ma'am, it Who is will going be to tell 0. them? 0. Do everyone understand it? It would be 0 minus 20 plus 20 is equal to 0. Okay, question number 3. What is A part? 3 minus 8. 4. 3 minus, let me do it over here. 5. 5. Minus 5. 7 minus 14. प्लस 7. माइनस देखो 7 का साइन प्लस है 14 का माइनस है प्लस माइनस माइनस ओके तो Minus 14 में 7. से 7 माइनस करें यू विल गेट -7 0 प्लस माइनस माइनस 19 0 माइनस 19 किसके इक्वल होगा -19 0 माइनस 11 किसके इक्वल होगा -11 5 माइनस 8 किसके इक्वल होगा -3 -12 प्लस 7 किसके इक्वल होगा -5 Minus 5. ओके क्वेश्चन नंबर 4 कौन करेगा जल्दी जल्दी बताएं Can I do? यस मुस्तफा Miss, minus 5. Miss, minus 9. Okay, Minus -9. 9. Mohannad, you have done now. Okay, yes, Harim. Yes, Miss. B part. Yes, Harim, B part. Miss, minus 3. -3. When there are Can I two tell? negative signs and you have to add them. Harim, listen to me. Both the signs are negative. It means you have to add them. Okay. Yes. Okay, you will get -18. Okay, yes, Mustafa, C part. Minus 13. Yes, Ayat, D part. Minus 9. Yes, Fajr, A part. Miss, minus 12. There is no minus now. 12. 12. Yes, B part. 11. Miss, can I do? Yes, 11. Ayat, Mustafa. 6 plus 5. 6 plus 5 will be Miss 11. 11. Okay, -8 plus 2 will be. Yes, Harim. Miss 10. Minus Who is saying 10? No, 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 it's not No, going to be minus 10. 6, minus When there 6, are opposite signs and you have to subtract them. minus Listen to me, 6. bachcho. -6. When there are opposite signs and you have to subtract them. Who is saying 10? This is plus and this is minus. There are opposite signs, so you need to subtract them. Okay, -4 plus 7. What we are going to do? Are we going to add them or subtract them? subtract. 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 So what we will get? Minus 3. No. Minus 12. We will get 3 and the sign of the bigger number. Which is the bigger number? What is the sign of the bigger number? Plus. Plus. So Towards we will 3. get plus. Listen to me carefully. The figure shows part of a
thermometer. The readings are the degree centigrade. Find the difference between the temperature indicated by points A and B. So what is the temperature indicated by point B? This is 10 point. See, this is 10 point. This is 10 and this is 20. So this would be 15 and the middle one will be 15 and this is 16. Now what is this? 0 and minus 10. So this is minus 5, minus 6, minus 7. Now find the difference between the temperature A and B. So 16 Miss, I don't minus, understand this. yes, I'm going to tell you again. You need to read the temperature from the thermometer. Okay? Look at the thermometer carefully. This is 10. This is Ma'am, it 20. will be तो minus 10 और 7. 20 के ओके वेट 10 और 20 के सेंटर में क्या आएगा दिस इज द सेंटर लाइन तो इसके सेंटर में क्या होगा 16. 15 होगा 15 से नेक्स्ट वाली लाइन पे एरो बना हुआ है तो ये कौन सी लाइन होगी 16. 16 की इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है 16 अब यहाँ पे आयो 0 और 10 के सेंटर वाली लाइन का 0 और 10 के सेंटर वाली लाइन में क्या होगा 0 और माइनस 10 के सेंटर वाली लाइन में -5 होगा अब ये -6 -7 तो जिस लाइन पे एरो लगा हुआ है वो कौन सी लाइन होगी मिस -7. -7 ऐसे ही है अब ये बात क्लियर हुई हाउ वी इंडिकेट द पॉइंट्स अब वो कह रहे हैं डिफरेंस फाइंड करना है तो हमने 16 माइनस -7 लिख लिया अब माइनस माइनस क्या होता है +7 ऐसे ही है 16 + 7 हो जाएगा अब बताओ 16 + 7 क्या होता है 23. होता है 23. वेरी गुड अब बताओ किसको समझ नहीं आई एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन Yes. ओके अब ये देखो टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ऑन अ पर्टिकुलर नाइट इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड द नेक्स्ट मॉर्निंग टेम्परेचर राइजेस बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग तो रात को कितना था -5 अगले दिन कितना राइज हुआ राइज का मतलब होता है ऐड करना तो ऐड करेंगे हम 3 डिग्री तो क्या आ जाएगा यस -5 + 3 क्या आएगा -2 यस हरीम आपको समझ आ रही है No, miss, I don't understand. -5 + 3. हाँ अब मुझे ये देखें माइनस प्लस हमेशा आपने जब ऑपोजिट साइन हो तो आपने क्या करना है माइनस करना है माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन से ना एक प्लस का एक Yes. माइनस का है तो आपने इसको माइनस करना है तो अब आप जब 5 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा यस हरीम 5 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा Miss 2. 2 आ जाएगा अब बिगर नंबर का साइन कौन सा है व्हाट इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर Plus. बिगर नंबर कौन सा है बिगर नंबर कौन सा है 3 बिगर है या 5 बिगर है 5. 5 का साइन कौन सा है Minus. तो आप यहाँ माइनस लगा दोगी Okay. अब आ गई समझ हरीम ओके Yes, yes. चलो अब इन क्वेश्चंस में हमें और ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कैंस फेवरेट ये हमने फाइंड करना है अब ये सब ने मेरे साथ मिलके करना है और आप लोगों ने मुझे हेल्प करनी है 7 देखो 7 प्लस माइनस क्या होता है -3 अब यहाँ पे प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का साइन है जब ऑपोजिट साइंस हो तो क्या करते हैं ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं Subtract. सब्ट्रैक्ट तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 4. 4 और साइन कौन सा आएगा Miss, minus. साइन कौन सा आएगा साइन 7 बिगड़ है कि 3 बिगड़ है 7 बिगड़ है और 7 का साइन प्लस है तो साइन प्लस आएगा अब ये देखो 19 माइनस माइनस प्लस 1 तो 19 Miss, प्लस the 1 signs are the 20 same. We have to plus them. वेरी गुड ओके -5 + 5 -5 + 5 क्या हो जाएगा 0 8 + 8 8 + 8 क्या होता है 16 -14 + 6 अब 14 और 6 दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो क्या हो जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे Minus.
और साइन बिगर नंबर का -8 आ जाएगा। -2 + 9 क्या हो जाएगा? 7। -1 -6 क्या हो जाएगा? -7। 3 -12 क्या हो जाएगा? -9। 8 + 2 क्या होगा? 10। -4 + 6 क्या होगा? 2। -10 + 5 -5। -5 -3 -3 -6। अब -6 जल्दी जल्दी बताओ। अब वो कह रहे हैं -8 किसका आंसर आया था? ढूंढो। ओहो। मिस मिस -14 -8 + किसका आंसर आया था? 5 वो वो -14 डिजिट + 6 कौन सा है जिसका आंसर -8 आया? -8 आया था एज का आंसर, तो हम यहाँ एज लिख देंगे। 2 किसका आंसर आया था? आंसर आया है एल का आंसर। +7 किसका आंसर आया है? आई का I आंसर। और 0 किसका आंसर आया है? D डी 4 किसका आंसर आया है? A and Y. ए। -6 Holiday. किसका आंसर आया है? -6 किसका आंसर आया है? वाई। तो हॉलीडे। कैन को कौन सा डे सबसे पसंद है? व्हाट इज द कैन्स हॉलीडे फेवरेट डे? हॉलीडे। ठीक है, this was a very nice activity that we have done. So we will continue tomorrow, inshallah. Now we have completed 8 questions. We will start from question number 9 tomorrow. तो आप लोग इसकी घर में प्रैक्टिस करना, मैं कोशिश करती हूँ कि as soon as possible वीडियोस भी अपलोड कर दूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Alafis, man, have a nice day. अल्लाह हाफिज।